हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं द आईएससी स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर फॉर इकोनॉमिक्स फॉर 2025 एग्जामिनेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कवर किया था। इस वीडियो में वी विल कवर ऑल द क्वेश्चंस अंडर क्वेश्चन नंबर 4 इंक्लूडिंग द और क्वेश्चंस। अगर प्रीवियस वीडियोस मिस आउट हो चुके हैं देन डू चेक आउट द चैनल, हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि जब भी एक नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों के संग भी शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर सके। And during preparation, कोई भी अगर doubts हो, do let me know in the comments box below. I'll help you out. Without further ado, let's get started with question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 रोमन 1 में दिया गया है हमें फिक्स्ड कॉस्ट ₹30 और हमें कैलकुलेट करने कहा गया है टीबीसी एंड टीसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ है 0, 1, 2, 3 एंड मार्जिनल कॉस्ट हमें दिया हुआ है 0, 10, 15 एंड 25। तो इस तरह टेबल बनाओगे जहाँ पे वर्टिकली यू विल पुट द आउटपुट्स 0, 1, 2, 3, फिक्स कॉस्ट पुट कर दोगे 30 ईच एंड मार्जिनल कॉस्ट भी यहाँ पे पुट कर दोगे विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। टीवीसी, हाउ विल यू कैलकुलेट टीवीसी? मार्जिनल कॉस्ट, जो फर्स्ट रो का मार्जिनल कॉस्ट है दैट रिमेन्स एज इट इज, देन द सेकंड वाला जो होगा मार्जिनल कॉस्ट दैट प्लस ऊपर वाला, दैट इज हाउ यू कैलकुलेट बिकॉज द मार्जिनल कॉस्ट हम ढूंढते हैं वी डू द टॉप माइनस नेक्स्ट, तो यहाँ पे जस्ट विल डू द रिवर्स, यहाँ पे ऐड करते हुए जाएंगे। सो इन दिस केस 0 plus 10, 10 is the TVC, then again 10 plus 15 which is the next wala 25, and 25 plus next 25 is 50. That gives us the TVC. Total cost is fixed cost plus total variable cost. So 30 will be added to all this TVC to get the total cost. So 30 plus 0 is 30, 30 plus 10 is 40, 30 plus 25 is 55, and 30 plus 50 is 80. And that secures your 2 marks here. Let's have a look at the next question that we have. Question 4 Roman 2, cite two differences between returns to factor and returns to scale. यहाँ पे I have covered some extra differences. In case this comes as a long question, then you should be able to answer. Basis of distinction लिखना मत भूलना आंसर में, that is important. So first one is definition and the context. Returns to a factor. This concept refers to the changes in output when one factor production such as labor or capital, one factor कोई भी एक factor production is varied while keeping all other factors constant. So इसमें एक ही factor change होता है. Returns to scale. This concept refers to the changes in output when all the factors of production are varied proportionally. रिटर्न्स टू स्केल में सारे फैक्टर्स प्रोपोर्शनली चेंज किए जाते हैं। पीरियड ऑफ एनालिसिस, रिटर्न्स टू फैक्टर ये हमेशा शॉर्ट रन पे देखा जाता है जहां पर एक फैक्टर को चेंज किया जाता है एंड अदर्स आर कांस्टेंट। और रिटर्न्स टू स्केल ये हमेशा लॉन्ग रन में देखा जाता है जहां पे सारे इनपुट्स को चेंज किया जा सकता है साइमल्टेनियसली। टाइप ऑफ लॉ, returns to factor is governed by the law of variable proportions, which states that output will initially increase at an increasing rate, then at a decreasing rate, and eventually may decrease. Returns to scale is governed by law of returns to scale, which describes how output changes as the scale of inputs changes proportionally, resulting in increasing, constant, or decreasing returns to scale. Types of returns. There are three types of returns to factor: increasing returns to factor, constant returns to factor, and diminishing returns to factor. और यहाँ पर भी we have increasing returns to scale, constant returns to scale, and decreasing returns to scale. The names are different. It will be easy for you to remember. यहाँ पे returns to factor है और इसमें returns to scale है. And the final one is scale of production. Returns to factor focuses on changes in output with variations in single input, assuming other inputs remain constant. Returns to scale focuses on changes in output with proportional variations in all inputs. Okay, there could be more differences as well. If you're comfortable with them, you can include them in your answers. These are just guidelines for you to prepare and understand the concept in an easy manner. And again, you can frame these answers in your own words. ऐसा नहीं कि word to word यही लिखना है. This is only for your understanding, and then you can frame your answer in your own words. अपने words में you can write the answers. Meaning just ये होना चाहिए. Meaning change मत कर देना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। Question number 4 or का Roman 1, draw a well labeled diagram to show AFC which is average fixed cost and AC which is the average cost curves.
स्टेट द नेचर ऑफ ईच कर्व। यहाँ पे दो अलग डायग्राम की जरूरत नहीं है, एक ही डायग्राम में यू कैन शो बोथ ऑफ देम। दिस इज द AFC कर्व एज यू कैन सी हियर, एंड दिस इज द AC कर्व। AVC यहाँ बोला नहीं गया है, यू कैन इग्नोर द AVC कर्व एज शोन हियर। नाउ AFC एज यू कैन सी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ते रहेगा वैसे वैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कमते रहेगा। दैट इज वाई देखोगे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है थ्रू आउट। एवरेज कॉस्ट ये एक यू शेप्ड कर्व है। इनिशियली जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो एवरेज कॉस्ट घट रहा है, इट रीचेज अ मिनिमम, एंड देन आफ्टर दैट अगर प्रोडक्शन और बढ़ाया जाएगा देन एवरेज कॉस्ट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। इसी नेचर को ही यहाँ पे समझा के नीचे लिखना है। लेट्स हैव अ लुक। द AFC कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो हमने डायग्राम में देखा यहाँ पर, रिफ्लेक्टिंग द फैक्ट दैट फिक्स्ड कॉस्ट आर स्प्रेड ओवर एन इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। मतलब एज आउटपुट इंक्रीजेस, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता रहेगा, द AFC decreases because the same fixed cost divided by a large number of units। ठीक है, फिक्स कॉस्ट सेम है, डिनोमिनेटर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ते रहेगा एवरेज फिक्स कॉस्ट कमते रहेगा। दिस रिजल्ट्स इन एवरेज फिक्स कॉस्ट अप्रोचिंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस बट नेवर टचिंग इट। कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ओके, अगेन क्वेश्चन कैन कम, व्हाई एवरेज फिक्स कॉस्ट नेवर टचेस एक्स एक्सिस? So this could be a very simple reason for your understanding. Number two, average cost curve. The AC curve is typically U-shaped, जैसे हमने डिस्कस किया। Initially, as production increases, AC decreases. Why? Due to economies of scale, which we all understand. Bulk production में cost कम हो जाता है, where average cost fall as output increases. लेकिन after reaching a certain level of output, the AC starts to increase due to diseconomies of scale. Now ये economies of scale तो हमेशा नहीं चलेगा। To a certain level of output ये चलते रहेगा, और उसके बियॉन्ड अगर प्रोडक्शन किया जाता है तब कॉस्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, बिकॉज देन इट बिकम्स डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, जहाँ पे एवरेज कॉस्ट स्टार्ट्स राइजिंग एज आउटपुट इंक्रीजेस। द लोएस्ट पॉइंट ऑन द AC कर्व रिप्रेजेंट्स द मोस्ट एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ये जो लोएस्ट पॉइंट है AC कर्व का, वही है द मोस्ट एफिशिएंट पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, so this covers your answer. If you still have any questions, do let me know in the comments box below. Let's move on to number 2. यहाँ पे क्वेश्चन में एक टेबल दिया हुआ है हमें, जहाँ पे टेबल 1 एंड टेबल 2 आर गिवन, जहाँ पे वी हैव मशीन लेबर एंड आउटपुट ऑफ A, एंड देन वी हैव मशीन लेबर एंड आउटपुट ऑफ B। दोनों टेबल को स्टडी करना है हमें और बताना है कि दोनों टेबल में क्या डिपिक्ट किया जा रहा है विथ जस्टिफिकेशंस। सो अगर ध्यान से देखोगे, टेबल 1 में मशीन्स फिक्स्ड हैं, 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। लेबर को एक एक करके बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा प्रीवियस आंसर में, एक फैक्टर को इंक्रीज किया जाता है, अदर फैक्टर रिमेन्स द सेम। दिस इज द वेरिएबल प्रोपोर्शन और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। सो टेबल 1 आउटपुट ऑफ A depicts law of diminishing returns or variable proportions. In table 1, the number of machines is constant at 5 and only labor input is increasing. The output increases as more labor is added. लेबर अगर बढ़ाया जा रहा है तो आउटपुट भी बढ़ रहा है, देखो। बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट इज डिमिनिशिंग। आउटपुट तो बढ़ रहा है, नया लेबर ऐड किया गया है और आउटपुट बढ़ रहा है, बट रेट एट विच इट इज इंक्रीजिंग वो डिमिनिशिंग रेट में बढ़ रहा है। ईच एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर contributes लेस टू आउटपुट देन द प्रीवियस वन, demonstrating the law of diminishing returns. टेबल 2 में देख लेते हैं, इट डिपिक्ट्स द लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पर क्योंकि मशीन और लेबर दोनों को ही प्रोपोर्शनली बढ़ाया जा रहा है। जब 5 मशीन और 10 लेबर थे, नेक्स्ट में 10 मशीन और 20 लेबर किया गया, मतलब डबल किया गया। और यहाँ पर 15 मशीन और 30 लेबर, मतलब फर्स्ट वाले से ट्रिपल किया गया। और प्रोडक्शन भी अगर देखोगे, प्रोडक्शन भी डबल हुआ है और यहाँ पर फर्स्ट वाले से कंपेयर करके ट्रिपल हुआ है। सो इट इज रिटर्न्स टू स्केल। सो यहाँ पे दैट इज व्हाट द सेम थिंग explained here, that both machines and labor are increasing proportionally. The output also increases proportionally with the inputs. Doubling the inputs, machine and labor doubles the output from 400 to 800, and tripling the inputs triples the output from 400 to 1200. This proportional increase in output with a proportional increase in all inputs demonstrates the laws of returns to scale.
ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखना हो गया, जो प्रीवियस हमने डिफरेंसेस पढ़े थे, दैट मेक्स इट क्लियर हियर एज वेल। इस वीडियो में यहीं तक। स्टे ट्यून फॉर मोर, सब्सक्राइब टू गेट नोटिफाइड, ताकि वीडियोस मिस ना हो, नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों के संग शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।